Good morning, sir. Good morning. 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 Aryan Pandey, Vedant Raj, please mention your roll number and section. Princy Priya, also please mention your roll number and section. स्नेहिल कुमार, अटेंडेंस में जरा सा मुश्किल हो जाती है. Without the roll number and section, it is a bit difficult for me. I have to search a lot. Okay, we'll start in couple of minutes. Okay. So in our previous class, we have discussed about we have started this chapter on respiration. We discussed some basic points about respiration, what is respiration, where it can take place. Okay. So please take care to mute, if anybody is.
Okay, so we started a basic discussion on what is respiration, where it takes place, and so on. So, anyone want to guess that respiration, where it takes place? Does it take place in all living cells, or it can also take place in, you know, Sir, after all living place, sir. Sir, all living cells. only living cells, right? All living cells and only living cells will show respiration. Here we are talking about respiratory system. Okay, so system, there is a system. We are talking about the system. So basic respiration, all of you know, it involves the conversion of some substance, okay, into something else, and in that process you are trying to derive energy. So in a biological system, energy, how we can utilize by storing it in the form of chemical energy. Chemical energy. Plants will perform photosynthesis. Okay. So photosynthesis is in a chemical way just opposite to respiration. In photosynthesis, sugars will be formed, right? Carbon dioxide and water will combine together, form the sugars, right? Starch. In respiration, what is going to happen? Opposite is going to take place. Sugars are going to break down to release carbon dioxide and water. Okay, some energy. Here in photosynthesis, sunlight is used for making the energy. Here in animal system as well as in plant system, respiration takes place. In microbes also respiration takes place. So all living systems will show the respiration. During respiration, what is going to happen? Some energy is produced. Okay. So if energy is produced in a certain chemical reaction, can we utilize that energy? For example, we are burning the coal or wood. So it is going to release heat energy, light energy, right? So can we use that energy for our body purpose? No, sir. We are not able to use. That is a combustion. Combustion is uncontrolled reaction. What happens in our body is a respiration. It is a highly controlled reaction. So the energy that is going to release from these chemical reactions that are taking place inside the cell, they are in packets. You can say like in small packets. There is a certain amount. It is not that in one burst there is going to be huge amount of energy will release. That is, if such a thing take place, then it will cause an explosion. Correct? But that is not taking place in our body. What is happening is a controlled reaction is taking place. For example, glucose is getting oxidized with what? Oxygen. Okay, oxygen, in the presence of oxygen, to completely convert into carbon dioxide, water and energy. Okay. So we will write this in chemical formula wise. So C6H12O6, that is the formula of glucose, reacts in the presence of oxygen to form the carbon dioxide, water and energy. So this energy is what energy? Is it light energy, heat energy, potential energy, kinetic energy? What energy is coming out here?
Sir, heat energy. Chemical energy. Can we say chemical energy? Because here this glucose is made up of bonds, right? It is a chemical compound. Glucose is a chemical compound which is having all these atoms connected by bonds. So in the presence of oxygen, these bonds are broken down. Okay, how they are broken down? Carbon is combined with oxygen completely, only carbon and oxygen. Other element here is hydrogen. Hydrogen also completely combined with oxygen. There is no other element left. Okay, so the carbon is completely oxidized, hydrogen is completely oxidized, and in this process of the breaking of the bonds, what happened, that bond energy got released. Okay, that bond energy got released. So that energy was the chemical energy that was stored in this bond, and because it is now broken, it is released as the form of a heat. Okay, so earlier it was, this energy was there in the bonds. Now since oxidation has taken place, the bonds are broken, new compounds are formed, this excess energy has been released in the form of heat. So chemical energy of the bonds was broken down into heat energy. ये जो हीट एनर्जी है हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बना के रखना पड़ता है. If the body temperature is going below 37 degree centigrade, that is a dangerous situation. We don't want that to happen. So that is why we have to eat 3 times a day. खाना खाते रहो, एनर्जी बर्न करते रहो, just for the purpose of maintaining the body temperature 37 degree. So this heat energy that is released is required for maintaining the body temperature. It is also used, very important, to store that energy. Okay, so how can we store this energy? Because if we don't store the energy, if we don't store this energy, हो सकता है कि कभी कभी खाना नहीं भी मिले, then what we will do? तो बॉडी का सिस्टम है, खराब समय के लिए प्रिपेयर करके रखना चाहिए. So it has to store this energy. Which energy? Heat energy. In what form? In the form of chemical energy. So this heat energy is stored in the form of chemical energy in a compound which is called ATP. Okay, adenosine triphosphate. ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट ग्रुप्स रहेंगे. Okay, there is a ester bond. We will not go into chemistry there, but here important point is that this excess energy is stored in the form of chemical bonds. तो जब जरूरत पड़ेगा इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, एनर्जी रिलीज होगा, और फिर यही एनर्जी दूसरे केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, ड्राइव करने के लिए काम आएगा, है ना. सो इन दिस वे, in respiration, what is happening? Aerobic respiration, that in the presence of oxygen, what is going to happen? Glucose is going to break down to release energy. This energy will produce the excess heat, and the energy will also be stored in the form of the ATP. Okay, so far it is clear. Any doubts you can ask? Okay, sometimes what happens, that there is less oxygen, or there may be no oxygen also. Okay, for example, in the human body, okay, we do aerobic respiration.
the cells in our body do aerobic respiration. Special circumstances, आप फास्ट रनिंग कर रहे हैं, okay, when you are running very fast, then what happens, after a certain time the muscles will get very tired. Why it is happening? During glycolysis, you know this reaction, right? What is going to happen in glycolysis? What is converted to what? Glucose is converted to correct. During glycolysis glucose is converted to pyruvate. ये होता है, लेकिन when we are running very fast, okay, fast running, then what happens, the oxygen in our body, in the muscles, okay, they are getting very rapidly consumed. So by this way what is happening, less oxygen situation is taking place. When there is very less oxygen, then what will happen is this pyruvate by the Krebs cycle cannot convert into this carbon dioxide, water and energy. Okay, this is taking place in the mitochondria. करेक्ट, ये आपके पहले वाले चैप्टर में था, इसके प्रीवियस चैप्टर्स में था, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल आपका पढ़ा हुआ है. So glucose will convert to pyruvate, but when the muscles are working very fast, at that time there is less oxygen, and when there is less oxygen, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होना है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि लास्ट कौन एक्सेप्टर है, ऑक्सीजन एक्सेप्टर है, और ऑक्सीजन की कमी है. तब शरीर क्या करता है, पायरुवेट को लैक्टेट या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. ओके, this lactic acid will give that, because it is acid, no, acid will give some kind of a burning sensation. In the muscles we feel the kind of burning sensation when we run very fast, you know, after some time we feel burning sensation. That is because of the production of the lactic acid. This lactic acid, it can be broken down into carbon dioxide and water, okay, to release the energy. This conversion is not taking place in the mitochondria. In Krebs cycle is taking place in mitochondria, but this pyruvate to lactate is not taking place in mitochondria. And whether it is taking place in the presence of oxygen or absence of oxygen. Pyruvate to lactate is taking place in the absence of oxygen. Absence of oxygen. Absence of oxygen. This lactic acid getting converted to carbon dioxide and water will produce only 2 ATP of energy. Okay, but this 2 ATP of energy आपको बहुत जान देता है, आपके उस समय जिंदा रहने के लिए काम आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं. अगर ऑक्सीजन रहता तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल खूब चलता और खूब सारा एटीपी बनता. ओके, so when normal this is taking place, okay, then what is happening, it is going to produce 38 ATPs. okay, previous test में भी मैंने पूछा था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में 36 ATPs लेस बनते हैं, ट्रू और फॉल्स. 38 में से 2 ATP, यहाँ केवल 2 ATP बन रहा है, यहाँ 38 ATP बन रहा है. But these 2 ATPs will able to give you that immediate little bit of energy for surviving purpose. लेकिन ये जो है ना, ये आपका कर्जा है, इसको बोलते हैं डेट. डेट यानी कर्जा.
जब ऑक्सीजन फिर आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, तब जो है जितना भी ये एक्स्ट्रा लैक्टिक एसिड कन्वर्शन टू सॉरी ये जो भी लैक्टिक एसिड बना, okay, that lactic acid has to be, that energy has to be recovered. Okay, that one is not very much, we will not go into the detail, that is not part of our syllabus. Okay, just a simple thing is we are talking this about oxygen debt. Okay, this is known as oxygen debt, क्योंकि ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो है इस लैक्टिक एसिड को यूज करके एनर्जी बनाया जा रहा है, इसको यूज किया जा रहा है। जब ऑक्सीजन वापस आ जाएगा, इस एनर्जी को रिकवर किया जाता है यहाँ से। Okay, but we are not interested in details here. Important point is what? This is the anaerobic respiration. So anaerobic respiration will take place in the absence of oxygen. Okay, it is taking place in the absence of oxygen. In human body, where it is taking place? In the fast, when you are running very fast in the muscles, it will take place. Glucose will convert into pyruvate, that is the glycolysis. क्या ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक है कि एनारोबिक है? So it occurs in both aerobic and non-aerobic, sir. Yes. Okay, whether oxygen is present or absent, no problem, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो रिएक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया के रिएक्शन में जो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, दैट इज ऑक्सीजन। सो नो रिएक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया विल टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ग्लूकोज टू पाइरुवेट का जो कन्वर्शन है, ग्लाइकोलाइसिस, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। जो भी स्टेप्स है, आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस एक स्टेप नहीं है, ग्लूकोज टू पाइरुवेट एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, इसमें a series of 10 steps are there, small steps, each one has the different enzymes. Okay, कन्वर्शन चलते रहेगा, लेकिन कहीं पे भी इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, और इसीलिए ऑक्सीजन रहे या नहीं रहे, ग्लाइकोलाइसिस का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ग्लाइकोलाइसिस चलते रहेगा। लेकिन ये जो पाइरुवेट है, ये पाइरुवेट, इज इट ए कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। ये रिएक्शन जो हमने देखा, कार्बन हाइड्रोजन पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन गया, वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। लेकिन ये जो पाइरुवेट है, दिस कंपाउंड इज नॉट ए कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ओके, so in glycolysis what is happening, it can take place in the cytoplasm, presence or absence of oxygen। उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए, उसका कंप्लीट एनर्जी निचोड़ने के लिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। ओके, सो एनारोबिक रेस्पिरेशन, कैन इट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया? No, sir. No, sir. पक्का? एवरीवन इज ओके विद दैट वन, नो डाउट अबाउट इट, है ना। Yes, sir. माइटोकॉन्ड्रिया में एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है भैया, इसमें तो ऑक्सीजन ही फाइनल है, यहाँ पे केवल एरोबिक बिजनेस होगा। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस है, और भी कई रिएक्शन होते हैं, उनका ऑक्सीजन से लेना देना नहीं है। ओके, नाउ वी विल लुक a little bit into the economy, क्योंकि खर्चा जो होता है ना, उसका एक हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो C6H12O6 6O2 that is oxygen gives rise to 6CO2 6H2O कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। और जो एनर्जी रिलीज हुआ, इसका जो हम लोग कैलकुलेशन जो है यूजिंग ए कैलोरीमीटर, जब उसका निकालते हैं तो इसका आता है 686 किलो कैलोरीज पर मोल। पर मोल, मोल मतलब क्या हुआ?
1 mole of any substance is equal to molecular weight in grams. ओके, ये तो ग्लूकोज है. तो if you take what is the molecular weight of glucose, is it coming to, आप देख लीजिए. Okay, you can calculate. Once you calculate what is the molecular weight of glucose, that only if you write in grams, that is the mole. Okay, in 1 mole how much will be there, grams of the molecular weight of substance will be there. तो उतना आप लेके उसको आप जला दीजिए, ग्लूकोज को जला दीजिए. जब आप उसको जलाते हैं, ये तो नथिंग बट ऑक्सीडेशन ना, वो आप बॉडी के अंदर उसको जलाइए या कोई अपैरेटस के अंदर लेबोरेटरी में उसको जलाइए. जलाने के बाद उससे एनर्जी निकलेगा, जलने के बाद तो एनर्जी निकलेगा. तो उस एनर्जी को आप कैलकुलेट कीजिए, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज. वो जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इतना एनर्जी वो होता है, 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी. ओके, दिस पार्ट इज ओके. इसी चीज को हम लोग दूसरा यूनिट्स है किलो जूल्स आल्सो कैन बी रिटन. ओके, so when you can do conversion, okay, that is not very important. But what is here important is 1 ATP will give equivalent of how much energy, 7 calories, 7 kilocalories of energy. Okay, 7 kilocalories of energy can be derived from 1 ATP. Okay, so 1 ATP, adenosine triphosphate, 3 high energy bonds are there. From 3 bond breakages you can get 7 kilocalories of energy. तो एक्चुअली कितना एटीपी रिलीज हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन में, 38. So we will multiply 38 into 7. ओके, क्योंकि एक एटीपी में 7 किलो कैलोरीज आता है. जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 266 किलो कैलोरीज. यानी आउट ऑफ दिस 686 किलो कैलोरीज, जो कि आप इसको ग्लूकोज को डायरेक्ट बर्न करने से इतना एनर्जी आपको निकलेगा, उसमें से 266 किलो कैलोरी का एनर्जी किसमें कंज्यूम हो गया, एटीपी में एनर्जी को स्टोर करने में कंज्यूम हुआ. ओके, सो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. बीच में एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना, वो जो बॉन्ड बना, वो बॉन्ड बनाने के लिए ये एनर्जी यूटिलाइज हो गया. कितने बॉन्ड बने, 38 एटीपीस का बना. तो ये एनर्जी को बॉडी जो है स्टोर कर पाया. किस फॉर्म में स्टोर कर पाया, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर किया, बॉन्ड के फॉर्म में. तो बचा कितना, 686 माइनस 266, 420, 420. जो 420 था वो उड़ गया, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में एस्केप हो गया फ्रॉम द सेल. ओके, so 266 kilocalories of energy was utilized for formation of ATP. How many, 38 ATPs, and 420 kilocalories was escape as form of heat. Okay, this part is clear. Any doubts you have, you can ask. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है. इफ यू आर फीलिंग एनीथिंग इज कंफ्यूजिंग, नहीं समझ में आ रहा है, इज क्लियर. ओ चलिए, सो फार आई थिंक we have time till 12 o'clock only, right? Yeah. So we will continue further on this chapter. Let me take the attendance. In the meanwhile, if you have any doubt, you can ask.
Okay. So I will see you all in the next class. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you all. Thank you very much.